When the homework, we have to observe what are the petty things. You have to recognize them. You have to scale them 0 to 10 and see if you're giving any importance to things which you feel they are petty, and or are they really petty, or they are worth brooding over. That was the homework. सो अभी वो पेट सो आप क्या वो ना पेटी 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 आपने ऐसे ही बहुत बार बोला, पेटी पेटी पेटी, तो 2 दिन तो सिर में वही चल रहा था, पेटी पेटी। उसके बाद what I realized is, ma'am, to scale it 0 to 10, either the thing is wrong or right मेरे लिए, या तो मुझे वो बीच में नहीं चाहिए। अगर वो प्लेट उठानी है तो उठानी है, ऐसा है मेरा मतलब। तो आई अगर वो प्लेट अभी लेकिन अगर जगह पे नहीं भी है तो आई विल गिव इट अ 2। अर्लियर आई वुड बी 9, ऐसे 9 मतलब क्यों प्लेट नहीं है ऐसे। अभी लेकिन मैं किसी को गुस्सा नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट वो मैं उठा के खुद ही रख देती हूँ, ऐसा टाइप्स खुद उठा के रख दो। बट हाँ, वो जगह पे होनी चाहिए प्लेट, दैट इज देयर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी। एंड इफ इट इज़ नॉट डन देन आई विल नॉट से आई वॉज फीलिंग वेरी ऐसे अनकम्फर्ट, मुझे पता है वो करना है मुझे, तो मैं उठा के रख दूँगी। सो सर इसमें क्या हुआ, सो कपल ऑफ थिंग विच आई ऑब्जर्व्ड इज, सो माई सन ही वॉज देयर विद मी, मेरे भाई का बेटा भी आया था उधर, और इन लोगों ने सबने डिसाइड किया हम बाहर से खाना मंगाएंगे। सो मैंने किसी को कुछ भी नहीं, सब मंगा रहे हैं, सो लाइक आई एम ऑल्सो एट ईज। तो दे वर ऑर्डरिंग एंड सो एवरीबडी हैड देयर स्पेस, जैसा जिसको चाहिए था वैसा। सो आई वॉज नॉट इंटरफेयरिंग। वो खाना खा के उठ के चले जाते, खूब घर बिखरा हुआ है, 2 लड़के थे घर में बड़े बड़े, एंड सो आई वुड जस्ट पिक अप द थिंग, एंड मेरा बेटा वापस आके मुझे बोला, अरे माँ ये उठा लिया आपने, आई एम फीलिंग बैड, ऐसे करके बोला उसने। मैं नहीं बेटा, जितना होता है कर लेंगे आप, ऐसे करके। देन बिकॉज ऑफ दिस आई वॉज एट ईज, आई थॉट ही विल रिटर्न बैक ऑन फ्राइडे। वो लोगों को जैसे वो जगह काटती है ना, तो दे वॉन्ट टू कम बैक टू बॉम्बे। सो माई सन ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, माई हस्बैंड ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, and we have come today to Bombay. So that was a very nice feeling I got. So like I gave them space, तो वो लोग भी ठीक gave them means अभी it's become like this was a test for me in fact. My son has seen me in a certain way earlier, and now when he saw कि मैंने कुछ बोला नहीं, and हाँ, so Monday हमारी क्लास ख़त्म हुई तो वो दोनों बच्चे मेरे ही रूम में थे, and they had put that PS4 और ये वो खूब वैसे ना आवाज़ हो रही है। तो मैंने उनको बोला, रात को 10 बज गए, 11 बज गए, तो मैं बोल रही हूँ अभी बंद करो इसको, तो नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी आवाज़ जोर से नहीं, बट आई वॉज वेरी फर्म, ऐसे ये अभी बंद करो, वे कौन सा शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें से। एंड देन दे टुक दैट PS4, दे टुक इट टू द डे रूम, वहाँ जाके उन शिफ्ट हो गया पूरा। एंड माई रूम वॉज ओनली यूज फॉर स्टडीज। उनको जो पढ़ना होता था तो मेरे रूम में आते थे नहीं तो वो लोग बाहर किए थे। सो दैट ऑल्सो वॉज मंडे को सॉर्ट आउट हो गया। एंड वन मोर थिंग हैपन, और मैं भी बोलने वाली थी, भूल गई वो। So like it was very good. They knew that this is the boundary, and like everything, everybody was respect. So I would not say it's real, but yes, I could also see there is so much of ये जो बच्चे लोगों की लाइफ आजकल की जो है, it's so different. I observed my son very closely. They are on social media. He is doing lot of work. उसके कॉलेज के भी क्लासेस भी हैं और बहुत सारी चीज़ें, एंड दे आर मैनेजिंग ऑल ऑफ इट। और रात को भी 2-3 बजे कितना भी सोते हैं, फिर खुद ही आके सो जाता था। आई वॉज नॉट टेलिंग हिम, बट दे हैव टू मच ऑन देयर प्लेट। आई फील बहुत सारा कुछ है, बट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ देयर लाइफ। ऐसा पहले जैसे मुझे देख के होता था ना, जब हम यहाँ थे ना, तो मैं ये क्या कर रहा है, सो देयर वाज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप वाज देयर आई फील, which now when since I have distanced myself, तो it's kind of मतलब again he is comfortable with me is what I can see. So I don't have anything called petty. uh, I have this thing to fix कर लेती हूँ। fix मतलब करना है मेरे लिए, it's important for me, and nothing, and it's always about the focus has to be, my focus is always on me only, कि मतलब मेरी ये क्लास, so even on the weekend I attended all my classes, सब कुछ आराम से हुआ, nothing was disturbed as such. So that's all. Okay. Thank you. Nice, very nice. Ma'am, Namaste, ma'am. Namaste, Raju. Namaste, everybody. Namaste. Ma'am, Namaste. forgive me.
I am not in. I have not gone through or done any homework. I will just attend today, please. मैम, एज ज्योति सेड, पेटी पेटी तो वैसे देखने को जाएगा तो सभी पेटी पेटी ही है ना, ऐसा कुछ भी, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ। वी वेंट ऑन फ्राइडे, गणपति चतुर्थी इट वाज ना। सो मैंने मेरे बेटे को बोला कि मैं एक भजन लगा ना गाड़ी में, तो बोलता है आई डोंट वांट टू ड्राइव लिसनिंग टू अ भजन। मैं बोला ठीक है। I said okay, don't. मैं ईयरफोन लाने को भूल गई, नहीं तो मैं खुद ही सुनती। लेकिन तो फिर मैं बोला ठीक है, सब देन आई सेड आई वाज जस्ट एज ज्योति सेड, आई वाज जस्ट बिहेविंग नॉर्मली। अंदर गुस्सा एक बार आया, फिर मैंने वो सॉरी फॉरगिव किया। गुस्सा तो आया तभी, इतना गुस्सा आया कि ऐसा लगा कि बाप रे गणपति क्या सोचेगा, ऐसा बोल के उधर तक का गुस्सा आया। गणपति का नहीं मालूम तूने क्या सोचा, वो जरूरी था। फिर मैंने मुझे पता सोचता नहीं है। मुझे पता था कि ये तो अभी बस भारी पड़ेगा, क्योंकि जाने का टाइम ही चालू हो गया ना स्टार्टिंग में ही। तो बोले अभी जाना है, 2-3 दिन रहना है साथ में, तो कहीं ना कहीं तो कटकेगा जोर से। तो फिर मैं ऑफ कोर्स आई वाज लाइक सॉरी फॉरगिव करते ही जा रही थी, बट देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर थोड़ा टाइम, थोड़ा आगे जाने के बाद बोली एक सुनाओ। मैंने ठीक है एक ही सुना दे। चुप रही इसलिए वो बोनस मिला। इफ यू वर टू रिएक्ट वो भी नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलता। तो उसको लगा कि अभी मम्मी बहुत लंबा लेक्चर देगी, ऐसा बोलेगी, ऐसी कैसी है ये, तो उसका पूरा हो जाता ना। उसका फोकस। तो मैं वही फिर देन एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। देन ऑफ कोर्स थ्रू आउट द लाइक उधर जब तक थे तब तक उसके ऊपर ही मेरा ध्यान था, लाइक मैं कोई भी चीज मेरे को अच्छा भी नहीं लगू तो मैं आई विल नॉट से, लाइक इट्स नॉट माय इट आई टुक इट एज रियली पेटी ओनली, पेटी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो इट वाज अ प्लेजेंट आउट फैमिली। नहीं तो मेरे को तो ऐसा, मेरा जरा ऐसा रहता है, मैं ऐसा डॉग वॉग को भी मैं बोलूंगी क्या मेरा भी किस्मत है इनके साथ में। ऐसा सब होता है मेरा, लेकिन अभी नहीं। अभी ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है, देखो अच्छा लग रहा है ऐसा। तो बिकॉज उधर भी कैसे होता है ना मैम, सिबलिंग राइवल तो ठीक ही ठाक है, वो तो ह्यूमन सिबलिंग राइवल। एक कुत्ते का, किसका कुत्ते को ज्यादा प्यार। तो मैंने दोनों कुत्ते को प्यार ही नहीं किया, मैं बोला अपने आप में रही। जो कुत्ता मेरे पास आता था उसके साथ मैं बात करती थी, मैं खुद होके नहीं बात करती जाती थी। So it was like that. So actually then as Jyoti said, I was thinking that only, what means if you go to think seriously, nothing is that important, like unless it is your growth. आपका ग्रोथ हो रहा है तो इट इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज आई डोंट थिंक एनी मैटर इन द वर्ल्ड शुड अफेक्ट माय ग्रोथ इफ आई वांट। that is one thing I realized. I'm sorry. You done? Yeah. चीज बोल. So my son made a comment. तो he saw me in a very fixed routine, like तो बोलता है जो मैं चाहता हूँ ना नानी को देखना, यू आर बिकम वेरी ओल्ड, यू आर बिहेविंग लाइक नानी एंड नानी इज ऑलवेज ऑन द टैब। तो नानी जो है तो रात को 3 बजे तक वो टैब, मतलब सब ये ना कौन सा भी तो चैनल ये वो सब ऐसे सब देखती है। बोलता है व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग व्हाट नानी टू डू दैट यू आर डूइंग ऑल द चोर्स, यू आर डूइंग एवरीथिंग एंड लाइक नानी इज ऑलवेज ऑन द टैब। सो दैट ही वाज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. He was actually observing everything and he could see. And I had my workshop also this हफ्ते में, तो they respected everything. मतलब इमो का workshop था मेरा, so evening session. I was away only, but they were all अच्छे से हो गया सब. Nice it was. Thank you. बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बात तो है. बाहर पेटी है, I feel now. Everything is it's meaningless actually, बिल्कुल ही meaningless. और अभी my husband was sitting alone at this thing. और मुझे बिल्कुल बुरा भी नहीं लगता कि अभी चलो उनकी लाइफ है, मतलब कोई
My husband said something very nice. Huh? So my son, I'm sorry I'm taking time, but this was really a revelation to me. So my son, before he went, he saw that we both were quite distant. तो बोलता क्या है इतना दूर आ गए हो आप लोग, यहाँ भी ऐसे अलग अलग रहते हो. तो माई हस्बैंड इज से नो शी टेक्स केयर ऑफ मी, शी मेक्स दिस फॉर मी एंड शी डिड, ऐसे 4-5. मैं चलो 5 पॉइंट बोलो, तो 5 पॉइंट बोले उन्होंने. तो बोलता oh then I think now I should get married. My son is saying giving up on marrying. तो he was very happy. My son was very happy seeing us. So that was a good thing. Yes, I wanted to share that. और उसको वो कंफर्ट लगा तभी रह गया, नहीं तो वो घर से दूर भागता था. नहीं तो नहीं रहता. नहीं तो नहीं रहता. तो इस बार रह गया वो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो रह गया, खुद से रह गया, मुझे बोलना नहीं पड़ा. ऐसा. Sharing? Sir, to do. Okay, so I'll share. So petty thing for me till today, not till today, but few months back, it was money. I used to never consider money to be important. It was very petty for me. But over the time, I've realized that it has its importance, and it cannot be just considered to be okay. है नहीं है क्या फर्क पड़ता है चलता है. But I've seen lives changing in these corona times because the lower group were actually struggling because it was the question of their life कि पैसा नहीं है तो कैसे करेंगे. So that is what for me petty thing was, but now it is not. हाँ, बट वो भी है कि कितना इम्पोर्टेंस देना है उस पर, कितना एनर्जी डालना है, कितना टाइम डालना है. इट्स अगेन वेरी ऑब्जेक्टिव थिंग. एंड yeah, over these last few months, it is an experience out of which I'm saying that as Dr. Jaydev has written that it's only through suffering the attachment, only after suffering does attachment goes and correct knowledge dawns. So attachment definitely is played a very important role. And intellectually we might think कि ये क्या है, कि बहुत stupid सी चीज है, attachment ऐसा कुछ होता नहीं है. But internally when we feel what we are going through, that time we realize that it's very painful to get out of that. And the fear of losing is also very high. But slowly with the knowledge of Samkhya, we can actually, if practiced daily, if we are aware, then only we'll be able to see the difference that the emotions which are being played and what actually needs to be done on that. So it's difficult, it's not easy. And yeah, so these petty things में और एक चीज कि घर पर कोई रूम में लाइट ऑन है, फैन ऑन है, तो कोई है नहीं वहां पर, तो आई वुड बी लाइक वेरी एंग्री कि क्या क्यों चालू है, क्यों चालू किसने किया, बंद करो. तो दैट स्मॉल थिंग्स में से इतना बड़ा झगड़ा होता था कि तुझे क्या करना है, लेट इट बी. So that those petty things were not petty for me. They were very important because it's not free. What all things have to be done to get that, and getting electricity is not also a joke. So that those things were considered petty for others, but not for me. But उसके बाद जो बवाल होता था, उसके बाद थोड़ा रियलाइज होता कि कितना छोटी छोटी बात पे इतना हम एंग्री हो जाते हैं या अपना स्टेट बिगाड़ देते हैं. सो देन
okay, then those things now have come under petty things. So this was the observation. Thank you, ma'am. मैम मेरा बर्थडे हमेशा छुट्टी के वक्त आता था एंड दैट टू रिजल्ट के डे आता था। April 30 बोलेगा तो रिजल्ट डे इन आवर स्कूल, तो कभी भी मेरा बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट नहीं होता था। अभी क्या हो गया, अभी मतलब वो एग्जाम रिजल्ट के वक्त और सेकंड रीजन रहता था, सब फ्रेंड्स छुट्टी में चले जाते थे, कोई नहीं रहता था उसके पहले ही चले, तो सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई नहीं रहता था। तभी ऐसा बहुत ये लगता था, लेकिन वो मिसिंग मैंने विघ्नेश शरण के बचपन से मैंने वो कमी उसमें मैंने पूरा किया। 10 साल तक किया, फिर मुझे बस हो गया अभी 10 साल ही हो गया ऐसा लगा मुझे नहीं, लेकिन वो क्या हो गया, उसको आदत हो गई है। तो ये बार क्या हो गया, उसका बर्थडे भी ना ऐसा आया, 9 को उसका बर्थडे और 10 को गणेश चतुर्थी, फिर बैक टू बैक बहुत सारा। वो अभी वो कैसे बड़ा भी हो गया है, तो फिर वो फ्रेंड्स के साथ करेगा अलग, ठीक है फ्रेंड्स के साथ कर रहा है, मेरा काम बचा है, बाहर से ऑर्डर कर देंगे बोल दिया तो अग्री हो गया। लेकिन वो भी फिर टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा, पहले कैसा मम्मी नहीं करती थी मेरे लिए, कुछ नहीं करती थी, अभी हो गया मैं ही खुद अपने लिए, मतलब बर्थडे जो भी 3-4 जन आते थे उनके लिए मैं ही घर में कुकिंग आई मीन छोटा बना के आई यूज्ड टू सेलिब्रेट एंड उससे खुश रहती थी। लेकिन इसमें कैसा, अभी ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, उसको तो आता नहीं, हम लोग को इन्वॉल्व होना पड़ता है, पहले ऑर्डर कर देते बोलते तो वो भी नहीं। तो फिर मेरे को ये सब सोच रही थी ना, तो मेरे को वो बहुत मेरा वाला याद आया कि मैं अपना बर्थडे 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 कर रही थी, और ये अभी आजकल वो वैसे ही उसको बोला था 10 साल में अच्छे से, इवन लास्ट ईयर भी 13वां भी उसका बहुत अच्छे से किया था। ये बार उसने खुद ही अरेंज करके इतना हम लोग को सताया, मतलब फिर फर्स्ट टाइम पिज्जा तो कभी ऑर्डर नहीं करता, लेकिन उसका फ्रेंड्स सर्कल में वो लोग वही खाएंगे। मैं बोला, फिर वो फर्स्ट टाइम ऑर्डर करने को आता भी नहीं था, तो दिस थिंग अरेंजिंग फॉर, बड़े लोग बोलते थे क्या बर्थडे का ये करना करके, लेकिन मैं दिस टाइम आई कुड ऐसा लगा कि क्या इसमें मुझे अभी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको है। और दूसरा मैंने एक ये किया, जैसा मेरा वेकेशन होता था उसका कैसा इमीडिएट गणेश चतुर्थी आजू बाजू में आता है, तभी उसका भी ऐसा ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो वो सेम कैसा कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो मैं देख रही थी, मुझे वो भी मतलब एंड बहुत हेक्टिक गया, क्योंकि दूसरा दिन गणेश चतुर्थी का भी पूरा परचेस करने के लिए उसका ये करना। और दूसरा मैंने पेटी थिंग कैसा, अभी इन लॉज और हम लोग अलग अलग रहते हैं, तो उनको कैसा, उनको मतलब हम लोग उनके घर आने का, मैं बोला एक ही घर है ना अपन, ठीक है तो एक घर में अच्छे से, मेरा मेरा फंडा है कि एक घर में अच्छे से करते हैं, लेकिन वो नहीं, 2 घर है तो तू तेरे घर में करेगी, मैं मेरे घर में करेंगे, और मेरे को इधर से उधर जाना पड़ेगा, एवरीथिंग भोग का सब करने का, एंड मुझे वापिस उधर भी जाने का। ये मुझे पेटी लग रहा था, और मुझे मतलब जिस टाइम सुबह से चिड़ी हुई थी, मैंने सब भोग का सब कर दिया, देन आई वाज ये, नहीं तो शिवा का कैसा वो मक्खन की तरह है, वो मेरे को अच्छा से बात करके वो वापिस उधर लेके जाता था। मैं ठान लिया, मैं बोला नहीं, एक्चुअली आई वाज टायर्ड आल्सो, वेरी टायर्ड, क्योंकि इसका बर्थडे का चू 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 मेरे को इसने बहुत हफ्ते से पहला सबसे क्या गिफ्ट देगा क्या गिफ्ट देगा, मैं बोला हाँ बच्चे ठीक है। फिर मेरे पास आया, मुझे बोला तू क्या देगी, फिर खुद ही जवाब दिया हाँ तू मेरे लिए खाना बनाती है ऐसा बोल के बेचारा वो सैटिस्फाई होके चला गया। मैंने उसको, आई वाज कुकिंग एंड दैट टाइम, मैं बोला हाउ, मैं फिर आई डोंट नो, लेकिन ही ओनली गॉट हिज आंसर एंड ही वेंट अवे। फिर उसको मिला वैसा गिफ्ट, लेकिन मेरे को क्या लगा कि वहां पे भी इन लॉज के घर में गई नहीं, गलत था क्या ये मैं खुद पे सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत नहीं किया, क्योंकि मैं टायर्ड थी और मैं वो जो चाहते थे वही मैंने किया, कि मैंने यहाँ पे भी अच्छे से बना के, लेकिन सब ना फिर वो ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी, अपन भगवान के नाम से इतना सारा बनाते हैं, और पता नहीं इट्स ठीक है, भगवान को भावस तो था, लेकिन फिर अल्टीमेटली मुझे लगा कि खुद के लिए बना के खा रहे हैं ना भगवान के नाम पे बोल के तुम खुद के लिए खा रहे हो, हर एक त्योहार के लिए भगवान का नाम वो भी वो सोच के मुझे थोड़ा पेटी लगा, ऐसा लगा कि उनके नाम पे अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू ईट, एंड
मैं अपने लिए बना रही हूँ, मतलब हम लोग के लिए बना रही हूँ, ऐसा एक वो एक मुझे पेट एंड ऐसा रिवाज या फॉलो करना, दैट आल्सो आई फेल्ट कि इज इट नेसेसरी इतना सारा साइलेंस में या कम इसमें अच्छे से छो एक इको इतना करके इतना सारा करके वी फील हेवी आल्सो एंड टायर्ड भी हो जाते हैं उसमें, वो मुझे देखने को मिला। एंड हाँ, ये इसमें मेरा कैसा वो कंडीशनिंग होता था वो मेरा नहीं हो पा रहा था, तो वो बैलेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत वो एक बैक ऑफ द माइंड, मुझे वो करने को नहीं हो रहा है, करने को नहीं हो रहा है, वो एक इरिटेशन था और उसकी वजह से ज्यादा ही इरिटेशन बढ़ रही थी। तो मैं वो डिफरेंस जान पाई कि कितना इजीली वो ब्रेक हो जाता है। एक डिसिप्लिन और रूटीन मैं फॉलो करना चाहती हूँ, थोड़ा दिन कर पाती हूँ, लेकिन ऐसे सब ऑब्स्टेकल जैसा रिचुअल फॉलो करना ये सब करते हैं तो फिर जो मुझे करना है वो नहीं कर पाती हूँ, तो वो एक साइलेंट इरिटेशन भी हमेशा रहता है एंड अच्छा नहीं लगता है, वो भी मुझे मेस्ड अप लग रहा था। दिस मेस्ड अप वाज अ पेटी फीलिंग फॉर मी। दैट्स इट। थैंक यू। What is the context in which doctor had used this word? प्रकृति ये करती है ना, शी वांट्स टू, मतलब वो पुरुष के लिए कर रही है। और ये इसमें और एक रियलाइजेशन हुआ, द प्रोसेस वी आर गोइंग थ्रू, वो गन्ने को कैसे अपन मशीन में डालते हैं जूस निकलते हैं, लेकिन लिटरली आई वाज फीलिंग माई सेल्फ एज गन्ना, बाहर भले ही वो एक्सट्रैक्ट बराबर हो रहा है लेकिन द चर्निंग आई कुड फील इन माई सेल्फ। I have a life and there is something called soul, ऐसा एक feel हो रहा था, and the changes going in our life ना, that is pain। इसलिए फिर मुझे वो एक कॉम्बिनेशन ना ऑल्सो आपने 15 मिनट दे दिया, तो आई वाज जस्ट रीडिंग 56 वाला डॉक्टर साहब का, मैं पढ़ी नहीं थी, आई वाज रीडिंग दैट, तो मुझे वही फीलिंग हुआ कि वो टर्निंग तो अपने इसमें हो ही रहा है, इसलिए दोनों आता है विदाउट पेन we cannot know also what is, and आपने लास्ट टाइम भी बोला था प्रकृति के पुरुषों को नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रकृति को वो नॉलेज का समझ है, तो पुरुष तक पहुंचने के लिए पहले समझना पड़ेगा, तभी फिर मैं वहाँ वो पुरुष तक बन सकूंगी ना, दैट इज ऑल्सो ए पेन में, वो मुझे रियलाइज हुआ। दूसरा मैं अपना वीडियो ही देख रही थी, मुझे लग रहा था मैं कितनी बात कर रही थी लास्ट टाइम, मेरे को पता नहीं वो सुनते वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा है कितना बात करती हूँ, ऐसा फिर कभी कभी मुझे लगता है। एंड बाहर ऐसा कुछ ऐसा डिस्टर्ब होते हैं ना, तो फिर एक रियलाइजेशन आया, अंदर डिस्टर्बेंस है, अंदर इट इज सो लाउड, इसलिए फिर वो बाहर क्लैश हो रहा है ऐसा करके, अब बाहर दिख रहा है ना वो एक्चुअली दैट इज अ साउंड, बट मेरे अंदर के उतना सारा आई मीन चल रहा है कुछ, तो इसलिए फिर वहाँ आई एम सीइंग द अदर वे, लेकिन वो रिलेट कर पा रही थी। Thus then, this evolution from Mahat down to specific entities is brought about by the modifications of Prakriti, though appearing as if it is in her own interest. Though appearing as if it is in her own interest. Though appearing as if in its own interest. मैम वही तो प्रॉब्लम है, ये नॉलेज की वजह से पुरुष की तरह गधा हमें प्लान करेंगे ना, तो फिर सब देखते वी कैन मूव अहेड विदाउट रिएक्ट, as if in her own interest, in the interest of another, for the emancipation of each individual Purusha. The whole creation of Prakriti is for Purusha to witness. The sun, moon, stars, trees, rivers, etc. The whole creation is the handiwork of Prakriti, only to exhibit the same to Purusha, and in turn gets nothing from Purusha.
and in turn gets nothing from Purusha. Like an earthen pot, which gets refilled repeatedly to quench the thirst of others, even though it has no interest of its own. Or when a mother or father tutor the child so that it grows up to be learned, though they personally have no direct gain or benefit in it. Due to our ignorance. Due to our ignorance. We get frightened, cry, shout, feel uncomfortable, feel upset, feel messy, and sit on judgment. And it amounts to saying, this has happened to me. मैंने नहीं किया. This happened to me. We keep ourselves engaged in petty things. Even though nothing comes out of it. What has to come out of it? True knowledge. Witness-like state of Purusha. Anything and everything. Unless and until it is moving in that direction of gaining that kind of a calm and detached state that you can be witness. You can maintain your balance. Money comes and goes. Only after suffering does attachment goes and correct knowledge dawns. So the petty things are those that we are attached to. Till that goes, the real knowledge, the correct knowledge, the knowledge that the Purusha and Prakriti are separate, dawns. There is something beyond the material world. We have to understand the dust. We have to understand the dual entity of Prakriti and Purusha. So what is petty is everything related to Prakriti. It is so much. So we are not able to see that as petty, is what I can conclude from everything that you have shared. We don't even, we refrain from calling it petty. रिफ्रेन मतलब इट इज नॉट इम्पोर्टेंट ओनली ना एक्चुअली जो हो रहा है बाहर आप देखो कुछ भी कर रहे हैं ना दिस विल नॉट लीड अस टू व्हाट वी आर सेइंग हियर So what will lead you to? This will lead us this kind What? of talk. Sorry, no. I mean that awareness of what we are doing and for that, what you are doing matters not. matters not. Absolutely not. What matters is the awareness. Whether you are dancing in the rain or you are traveling or you are attending a class or whatever you're doing. In all, what is important is the awareness. Awareness of that which is just witnessing all this. In doing anything, if you have got into any kind of reaction or involvement of, and even कि हाँ ये मैंने किया बहुत अच्छा लगा, that is as bad as getting reactive and angry and all that, because both are binding, both are Prakriti, both are petty.
Thank you. Wow. Unless and until we are able to see that they are both two sides of the same coin, you will not recognize what's really petty and what has to be left. तो अभी Yes, तक ma'am. तो ये अवेयरनेस ही मुझे बढ़नी है, जानकारी ही नहीं हाँ, है, गीता का इवन वो श्री थ्योरेटिकल कृष्ण जानकारी नहीं है. गीता में भी वो कृष्ण का वो अचानक याद आया कि अच्छा भी मैं ही हूँ, बुरा जो कर रहा है वो भी मैं हूँ. तो फिर मैं वही मेरे को ये लाइन अचानक आया, तो मैं बोल रहा अपन अच्छे बुरे में फंस जा रहे हैं, लेकिन कर तो वो एक ही है. वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी. Once Not in even. Sorry, ma'am. We don't even have to acknowledge that इससे जब मैंने कहा ना acknowledge कि and be aware that you are acknowledging. yeah, Aware of who is acknowledging. who is acknowledging? Yeah, you are that. I was acknowledging. Yeah. अहंकार का छोड़ना है. Slowly, ma'am. Work in progress. Slowly. Thank you, ma'am. In fact, I will say doctor foresees things like this, and I was under his tutelage in all this, working on a number of projects in this manner. So once satsangi tha, one of the few satsangs that I attended, and topic was on Karma Yoga. One शायद camp था, इसलिए I was there in the satsang. I was attending, doing the camp, conducting the camp. And this lady, yes, she was a camper. And she asked this question to doctor. Okay, what kind of, उस समय हम लोग camp के अंदर regularly, every day there used to be a Karma Yoga session. People used to actually be given task, and the experience of Karma Yoga was given. And she asked, what is the kind of activity one can do for doing Karma Yoga, experiencing Karma Yoga, that be a witness and not be attached to the fruits of the action. Doctor searched me out from the crowd and asked me to answer her. So of course he made me say this so many years ago, and so many years ago I can realize that why he made me say this. I said anything that is action can be Karma Yoga. Any work you do is a Karma Yoga activity, because Karma Yoga is not in the action. What is in Karma Yoga is to watch what is happening in you. Even if you are breathing, you are doing an action. That can be Karma Yoga. And yes, I find Hansaben's reactions also sometimes. I want to tell her once. कभी मिलूंगी, कभी बताऊंगी, तब बात करूंगी. मैंने कहा ये बहुत सालों पहले ही डॉक्टर जयदेव ने, means she cannot accept or believe that I could be doing what I'm doing, sitting at home and
looking after my parents and things like that. According to her, I am a high-flying executive only. Anything less than that, I wouldn't be able to do. What you are really doing is absolutely of no significance where the attitude of Karma Yoga is concerned. Because every work, every little thing is like assigned to you, no? Whatever is happening. That's why in inverted commas, there is that sentence, this has happened to me. Everything that is happening, you treat it as God-given thing. He once gave us all sadhakas. He actually on each person's name, he wrote the activity to be done and gave. There was one course that 40 of us were attending. So the slip that I got had draw water from the pump, fill the bucket, using the mug, take the bucket to the lawn. There used to be lawn near the front gate of the office earlier. So water the lawn with the bucket and the mug. So there were taps over there and pipes वगैरह सब होती थी. Still, but this was my activity. And similar was so many others. I remember one of them was given to trim. There were plants on the way to the hostel, dining hall jahan par hai. So on both the sides, she was asked to, Bharti Asrani, I remember so clearly. She was asked to trim those plants when they were already greatly trimmed. Then somebody was asked to arrange the files in the cupboard. And it was already well arranged. And kahan se unhone dhoond ke 40 such activities he brought. Everybody had something or the other to be done like this. And then he himself sat down for follow-up discussion. And he asked everybody. He waited till each and everyone had shared what happened, what they did, what was given to them. And like me, everybody else also had kind of modified the activity. अब वो कबड्ड ये तो जचा हुआ था, लेकिन उसके बाजू की जो शेल्फ थी वो जची भी नहीं थी, तो I organized that. भारती बोलती है वो तो कटे हुए थे already. कोई एक आधा था थोड़ा लंबा, तो उसको थोड़ा trim किया. Then I looked for something else that I could trim, so I trimmed that. I also found, because the lawn was already pitch with water, it was already overwatered. So I watered, there were small pots on the periphery of the lawn. While I didn't resist taking out the water from the pump, ki pipe hai to fir kyun wahan se pump se pani nikalna hai. I enjoyed that. I wanted to use, so that I didn't resist. Knowing me, I think he had put a double cross. तो वो एक तो किया, तो अपने आप में खुश हो गई, मैंने कर्मयोग किया. लेकिन दूसरा कर्मयोग ये बड़ा था ना, एनवायरमेंट वाली है, प्लांट्स को नुकसान नहीं करेगी. So I watered the pots around. I didn't water the lawn. Everybody did the same thing. He made only one statement. When the job is given to you, and because some of them also shared, okay, for me, all activity, all work that is given to me is given by God. Okay. Everyone has activity only given by God. Nobody else gives it. And when you are given a job,
It's none of your business to use your head and do what you feel and you think. When you're given a job, you just have to do it. And do it with full attention, concentration, enjoying it, and without expecting any result from it. The fact that, like in my case, I expected result from watering the plants. Therefore, I didn't water the lawn. Lawn को water करके तो negative result आता ना. इसलिए pots को water किया. I felt good. I got result. I watered the plant. These are petty things. तो क्या करना चाहिए था if it was not? अगर I आप should have पानी, watered the plant irrespective of whatever else. even if it is watered. That was none of my business. अच्छा, I was given the job to do. I should have done. just do And it. then he tells us, so not being able to recognize the pettiness. All these things become petty because we give it undue importance. Whereas that same thing, if you are able to just detach from it, then you're recognizing it's petty, okay. Let it be there. It's Prakriti. We are not able to see the petty things that we are indulged in because we are too attached. It is petty to say, no, everything was, I felt good, everything held a wine. It is petty. Absolutely petty. कि नहीं, मेरे को कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, मैंने कुछ चिल्लम चिल्ली नहीं की. That is also petty. It is also petty. You are so important. That mind is only Prakriti, no? वो भी तो त्रिगुणात्मक ही है ना. और कौन सा बड़ा महान I'm माइंड just है? thinking, मैम, ब्रह्मा का है. ये अब कुछ भी नहीं है मैम, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कैसे उसको फिर हम ऑब्जर्व, जैसे हम ऑब्जर्व You have to करें तो recognize उसको that this शब्दों में, is petty and this has to be left, and you're so dependent on it. Your dependency is pettiness. ये सब कुछ अच्छे से होना चाहिए. That is being petty. And when you say that नहीं, मेरे को लगता है मैंने सही किया, ये सोचना ही petty है. With the flow, okay, ये ऐसे होना है, जितना होता है करो. नहीं, ये ऐसे होना ही चाहिए, ये वैसे होना ही चाहिए, वैसे होना चाहिए. क्योंकि तुमने इसको इम्पोर्टेंट बनाया है. नहीं, हमारे में तो ये ऐसा होता है, हमारे में वो वैसा होता है. यहाँ क्या होता है? उससे यदि टेंशन हो रहा है, उससे यदि तुम्हारा बैलेंस जा रहा है, जो मेन तुम्हारा अवेयरनेस है वो नहीं रख पा रहे हो, तो सब गया. क्योंकि प्रकृति तो एक है, उसमें तो चेंजेस होते ही रहेंगे. और वो चेंजेस भले तुम कर रहे हो, तुम्हारा बेटा कर रहा है, तुम्हारा हस्बैंड कर रहा है, जो भी कर रहा है. हर कोई का अधिकार है उस प्रकृति पे, यदि तुम्हारा है तो.
प्रकृति तो एक ही है, सबकी है, वही पंचमहाभूत है और वही त्रिगुण है। इनको पहचान, रिकॉग्नाइज। ठीक है, जहाँ छोटी छोटी बातों के अंदर ही तुम रिएक्ट कर रहे थे, तो यू वर गिविंग too much importance to too pettier things. Now you're giving still importance to lesser petty things, but they are still petty. They still fall into that same category. What is important is to make use of that opportunity, whatever is happening, to watch. This way or that way. There is something beyond the material world. उसके बारे में हमने कितनी बार सोचा, वो हमें कितनी बार ध्यान आया? Where could we see that in the present moment? वो मैसी हो रहा था तो भी नहीं ध्यान आया उस बात का, तो और कुछ अच्छा हो रहा था तो भी नहीं ध्यान आया उस बात का, तो बल्कि मैसी होता है तो फिर भी थोड़ा तुम उससे डिटैच होने की कोशिश करते हो, तो देन यू आर एक्चुअली pushing yourself a little towards that detachment and therefore that which is beyond this. But after getting there, you get into another. नहीं, इससे तो ये अच्छा, so then you're back. बल्कि कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है तो उससे तो हम दूर हटने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, यहाँ आई एम कंफर्टेबल, ये सब ठीक है, so we don't even try to detach from there. We rather get more caught into the petty things. तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो ज्यादा बुरा है, जबरदस्त चर्चा हो रहा है तो वो योग के काम नहीं आता है। और हम बोलते क्या है कि नहीं, जरा थोड़ा सा ठीक हो जाए उसके बाद में योग करेंगे। There are people who might tell them, Manka, you join this course at this time. Just let me first get out of this and then I will join. Manka, while you are in it, this is for that. I can't get across to people. They have a set mindset. They don't understand. Yeah. Yes. So similarly, we are not understanding what is petty. Exactly. So now when I'm this in the past week, then क्योंकि जब सब ठीक हो जाता है तो अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। Now I'm all right. No, I'm not अभी all सब right. ठीक I'm ठाक not- हो रहा है तो अभी हम नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। So it makes me laugh. Ignorance ऐसा होता है. Then that same thing when I see the projection here, Manka, yes, it's true. We'll read 57. Yes, ma'am. पहले उसमें से पढ़ो. K57. वत्स विवृद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अग्न्यस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य. Just as the secretion of milk, which is unintelligent, is for the sake of the nourishment of the cow, similar is the action of the pradhan for the sake of the release of purush. Saying the same thing, using a different example. That all these action is for the sake of
liberation of the Purusha. So, same example, what I said for doctor applies again here. That anything and everything, it is jada, unintelligent. The petty, what doctor said in that previous karika, here it is called jada. It's unintelligent, and unintelligently it serves its purpose. And what is the purpose? Nothing for itself. Liberation. It does not serve any of its own purpose. For the liberation of the Purusha. Want to read the commentary of Vachaspati? Read it. At least let's read it. Yes. It is seen that insentient entities also act towards a definite purpose. For example, milk, though inert, acts in the form of flowing for the nourishment of the calf. In a similar way, the Prakriti, though insentient, is engaged in action for the purpose of bringing emancipation to the Purush. It cannot, however, be maintained that the secretion of milk takes place under the superintendence of God. Now, this action cannot be an instance vitiating the general proposition that the actions of inert things are due to the superintendence by sentient beings, because the activity of every intelligent being always proceeds from either selfishness or compassion. In regard to the creation of the universe, neither of this could be applied. From this, it is clear that this creation cannot be due to the action of a sentient agent. This is 1 second. The argument made by the Nyayikas that no action can happen without some conscious thing carrying it out. And therefore, the previous karika also, and so also this karika is saying that Prakriti in its auto mode does all this. And there is nothing for Prakriti to gain in it for itself. So milk has nothing to be just like. So they are giving their examples to prove that it is insentient and it is doing this, but it's not gaining anything out of it. So to prove that action takes place on auto mode in insentient beings by some design. And there is no conscious being, means Purusha has no role to play in it. Okay, go on. The Lord, who is all full, having all his desires fulfilled, wanting in nothing whatsoever, can't have any selfish motive in creating this world. Nor can it be said that the Lord created this world out of compassion, because compassion implies the desire to alleviate others' pains. But prior to creation, the spirits would have had no bodies, organs, and objects, and consequently, no pain, no suffering. Then to remove whose pain would the compassion of the Lord be roused? If it be said that the pain subsequent to creation is the cause of compassion, then it would lead to the vitiating position of the interdependence that creation is due to compassion and compassion is due to creation. Further, if the creation was an act of compassion on the part of Ishwar, one would wish Ishwar to create only happy mortals
and not beings with variated experiences. If diversity of experience is said to be due to the diversity of actions, then where is the necessity for the alleged superintendence of karmas by an omniscient and omnipresent being? The absence of control by a sentient being would then mean that deeds of man, which are inert, could have no manifestation, in which case there would be no production of their effects in the form of bodies, organs, and objects. The result of all this would then be that there would be no pain too. Thus, the removal of pain too would become easy. Prakriti, being unintelligent, has neither any selfish motive nor compassion to impel her to activity. Since she exists only for another's sake, the above said incongruities do not arise in her case. Since the activity of Prakriti is directed only by her sole motive to bring about the fulfillment of another's purpose, the instance of secretion of mother's milk for the sake of the growth of the child is quite appropriate. Yeah, कुछ समझा? All this justification for Prakriti's evolution. And that Prakriti is the doer and Purush Inert. has nothing to do in it. Prakriti is doing it for the sake of Purusha. The purpose of Prakriti is not for itself, not for its own emancipation, but for emancipation of the Purusha. Because of that, they're calling it inert. Yeah, but Prakriti is inert, material. Not because of that. Prakriti is inert. And what the others are arguing is, even the Vedantins, they want to say that inert cannot do anything. Some sentient being has to Yeah, command. there has to be a sentient intervention, which is what they are refuting. That sentient here doesn't do anything. Everything happens in the Prakriti and happens. But it seems like it is doing. Therefore, मैंने वो बार-बार पढ़ा. Appear as if. Appear. It's establishing duality here, na ma'am? One is establishing duality, but the focus really is on saying that Prakriti does, for everything that is happening in Prakriti, there's no role to play by Purusha. Purusha has no role to play in everything that is happening in Prakriti. It is not doing anything. Let's see what doctor has written. Jyoti? Just as the secretion of milk, which is unintelligent, is for the sake of the nourishment of the calf, similar is the action of the pradhana for the sake of the release of Purusha. Milk, being insentient or inert, acts in the form of flowing for the nourishment of the calf. In a similar way, Prakriti, though insentient, is engaged in action for the purpose of bringing emancipation to the Purusha. The mother's milk is for the benefit of the child and not for the mother. Similarly, Prakriti evolves for Purusha to witness. Can we think in a manner that whatever is happening for our own emancipation? Prakriti, though through its various activities such as true love, great suffering, unrestrained fun and frolic, give us an experience, and later lets arise a feeling
Let's arise a feeling in us that they are no more wanted. The feeling is similar to a man rescued from drowning in sea. When he comes ashore, he declares no more dips in the sea. There are many things in the world, and from morning to evening, we are involved in all these things. We get lost in petty things. Whatever is happening in life is worth watching, observing. Why it is happening. We have a choice. Just observe or get completely immersed in it and suffer. Unless we जूते don't. पड़े मैंने कहा कितने जूते मारे डॉक्टर ने, समझा? लास्ट लाइन तो बहुत अच्छे से समझा। एक के बाद एक मारे ही गए, चलो लास्ट में समझा एक। इट्स अ फैक्ट नो मैं जूते भी नहीं है ठीक सही बात है वैसे जूते लेकिन आई मीन ठीक है इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस देन तो यू हैव टू सफर ओनली ना वही कह रहे हैं वो वैसे अभी तो सारा कुछ ही पेटी हो गया आपने एक बार जब समझाया तो कितना पेटी करते हैं हम And he's used the word again. used it again really petty so everything we do we have to be yeah तो देर आर मोमेंट्स जहाँ कभी कभी हम पूछ लेते कभी कभी आ जाती है अवेयरनेस कभी कभी तो ऐसी विदाउट एनी नॉलेज जैसे वो बह के कर रहे हैं ना जस्ट मैकेनिकली हो जाता है वो नहीं So दैट इज outcome will be suffering. Ma'am, I have a question. Here in doctor's thing, he's again saying here, see ma'am, the mother's milk is for the benefit of the child and not for the mother. So actually, she has no control only over it. It's Satkaryavad only almost there. एकदम वो देखेंगे वो समझेंगे तो समझेगा ना कि हमारा कुछ नहीं है। हाँ? लक्ष्मी क्या बोलती है? अब नहीं बोलूंगी कुछ भी। मैंने नहीं मैम वो तो याद आता है बार बार तभी याद आता है जब भी मैं कुछ हूँ बोल के शुरू करती हूँ फिर मैं हार मान लेती हूँ हार इसके लिए मान लेती हूँ टू अवॉइड दिस फिर अपने आप में वो थॉट आता है कि जरूरी नहीं था मेरा कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा वो बाद में ये बाद में लेकिन आए तो सही शुरू तो हो फिर बाद में टाइम पे भी आएगा यदि बाद में आता है तो वो गैप धीरे धीरे कम होगा ना लेकिन आना तो चाहिए ना कभी तो। हाँ नहीं आता है लेकिन हंसी भी आती है कि आएगा तो हंसी आएगी ना कि मैंने क्या किया कहाँ चल रही हूँ और कहाँ अटेंशन डाल रही हूँ। बाद में क्यों आता है ऐसा लगता है एटलीस्ट बाद में तो आता है पहले तो बाद में भी नहीं आता था। अभी उधर भी आया ना अपनी ईगो बाद में क्यों पहले क्यों नहीं पहले की मेहनत करोगे तो पहले भी आएगा। So can we think in a manner that whatever is happening for our own emancipation? Yes, ma'am. So that's one homework. Very difficult. Correct. What are we doing in this world? I don't know actually. And wasting time. Then there are many things in the world, and from morning to evening we are involved in these things. We get lost in. Petty things. He didn't add these petty things. See how very shrewd. मैं होती तो बाकायदा उसको these petty things लिख देती, रब करती थी. But he's left it for you to figure out. सुबह से शाम जो करते हैं सब petty है, वो बोल रहे हैं. इसलिए तो पहला नहीं समझ में आता था. पहला शिवा बोला कारिका जब भी 2 years कर रही थी तो पढ़, मैं पढ़ती थी, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता था. बोले क्या लिखा है क्या, लेकिन अभी आप बोल रहे हो और simultaneously whatever is happening in life is worth watching. Whatever is happening in life for a student of yoga and Samkhya is only worth watching.
Watching. Only worth observing. Only worth observing. मैम यू नो व्हाट, ये सारे जो चीज है ना, इसमें आपका एक टर्म्स एंड कंडीशंस करके एक ही पॉइंट आप ऐड कर दो, फॉर अ स्टूडेंट ऑफ योगा, फॉर अ स्टूडेंट ऑफ सांख्या, लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं ना कुछ भी चीजों के साथ ऐसे, इट इज लाइक अनरेफ्यूटेबल। वो जब भी टैग लगा दिया जाए तो, बिकॉज मैम सी एट द एंड वी हैव अ चॉइस, just Yeah. observe or get completely immersed in it And be and suffer. suffer. And suffer. Like वो गिलोटीन नहीं था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वैसे उन्होंने लगा के रखा है, या तो देखो नहीं तो मरो। So what we do, we see the petty things, sometimes we observe, and थोड़ी देर के बाद हम ऐसे कैसे देख सकते हैं, we search for all reasons, नहीं ये मेरा कर्मा है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा इच्छा है। हम वो अलग अलग जो रस्सी है सबको पकड़ के हम लोग स्विंग कर रहे हैं, ये इस पार इस पार इस पार। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट मैम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। It is difficult, but it's not impossible. Whatever is happening in life is worth watching, observing why it is happening. What do you have to observe? Why it is happening. And the answer is for the emancipation of Purusha. So watch that it is happening for the emancipation of Purusha. Getting it? Yes, ma'am. So I also was, for a moment I had a wicked thought, but then I corrected it before telling you. Sorry, The forgive me. wicked thought was to tell you, watch how often in the day you look at anything as emancipation for yourself. But I'll change the homework. I'll say consciously choose one act in a day, however small, however whatever, for doing this exercise. Watching and watching as to why it is happening. Happening for your own emancipation. Can we think in a manner that whatever is happening for our own emancipation? At least once a day. Why you said it's wicked, ma'am? Wicked because I was first going to say, कितनी बार करते हो? गिनो. बोलने के मालूम है तरीके एक को बार भी नहीं बोल रहा। करते हो. करते ना ऐसे के। तो एटलीस्ट एक बार तो शुरू करो. ठीक है? Yes, ma'am. तो कॉन्शियसली करो, भले इंटेलिजेंटली होगा, एक्चुअल नहीं होगा, बट एटलीस्ट आदत तो पड़ेगी, एटलीस्ट लक्ष्मी की तरह वो तो कह सकोगे, लेकिन वो देरी से क्यों होता है, बाद में क्यों होता है, तो एटलीस्ट उतना ही सही, उतना तो करो जहां नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है ना? Yes, ma'am. Can तो we say 7 ma'am दिन that की 7 this- एक्टिविटी चाहिए शेयरिंग के अंदर मेरे को। Every day. Yes. Watch ourselves daily. Why it's That happening? whatever is happening for your emancipation. एक एक्ट में एटलीस्ट दिन में कोई एक चीज के अंदर तो अपने आप को इस प्रकार से देखो, बिकॉज द ओनली वर्थ डूइंग थिंग इज वॉचिंग। बाकी तो सब हैपन। 7 sharings. ठीक है? Yes, ma'am. Sure. ma'am, can हाँ. we even call it for our emancipation? That Yeah, is the because you are also Purusha, no? Really? Or you are not? we are Prakriti. You only said we are Prakriti. The body is Prakriti, mind is Prakriti. But body and mind to dies. Body and mind to dies.
बाकी क्या But you बचा? live. But you live. Carry on another body and mind. चलो, Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. मजा आया. Thank you. Interesting karikas. Ma'am is waiting for the sharing. Hmm. Thank you. अच्छा, uh, uh,